from ThePrint, and we spoke to few people in and around the village to understand that how surveillance has changed their lives. The cameras are fitted to electricity poles and ceilings of the walls to cover almost 90% of the village. Street fights, feuds to robbery of water motors that would frequently happen in the village of 2000 people have reportedly come to an end after the cameras were installed. तो हमको अरुण कुमार सिंह साहब पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जो हमारे यहाँ हैं वो हमको अपने ऑफिस में बुलवाया और कहे कि आप जो है ये चैलेंजिंग वर्क है इसको कराइए। और एडीजी साहब का भी मतलब उनका ये उद्देश्य है कि कम से कम हर थाने से 2-4 गांव में अच्छे से कैमरे लगाए जाएं हर गांव में। तो हमने कहा सर ठीक है। तो फिर उसी को लेकर के फिर उन्होंने सीओ साहब को मेरे साथ भेजा और एक एक पॉइंट को हम लोगों ने देख करके सर से मैंने बताया कि सर इतने कैमरे लगने हैं जितना संख्यात्मक हम बताए। वो तो हमको 10 से 11 कैमरे की बात बोले थे, लेकिन हम लोगों ने जब एक एक पॉइंट को ट्रेस किया तो उसमें 89 के आसपास मतलब देखा गया तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो सर ने कहा कि ठीक है, अगर संभव हो तो लगवा दीजिए। तो फिर हम लोगों ने जहाँ जहाँ ज़रूरी था सब जगह पे। तो अभी कितने कैमरा लगे इस गाँव में? 103 जी। और मेरे को जो सुनने में आया है सारे कैमरा का खर्चा आपने खुद से लिया है, वो थोड़ा बताइए। जी मैम, अपने पास से लिया। दरअसल हमारे मेरी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है। ग्राम पंचायत से पैसा उतना मिल नहीं सकता चूँकि और भी सारे काम हैं। मेरी ग्राम पंचायत का पूरे साल का 8 ही लाख बजट है। तो अब इसको मतलब 1-2 लोग और हमारे सहयोगी हैं, उनसे मैनेज करके फिर इस सारी चीज़ों को। It started with Operation Netra by the Gorakhpur police under the supervision of ADG Akhil Kumar. The idea behind the operation was to curb unorganized crimes, including robbery, eve-teasing, sexual harassment, and snatching. To ensure that the cameras were installed, the police motivated affluent locals. Following the success of Operation Netra, a new operation was launched named Har Ghar Camera. Operation Trinet is an inspiration of Honorable Chief Minister Yogi Adityanath ji. I remember in middle of June 2022, he was discussing on one of his visits to Gorakhpur, he was discussing use of technology, particularly cameras in crime control and sanitation. And thereafter we thought what we can do, what initiatives we can take, and we thought of a project called Operation Trinet, which was a basically public initiative under PPP mode, where we have, as on date, we have already installed 21,000 cameras in the district, and almost every part of districts is mapped by these cameras. So it all started initially, we motivated local industrialists, traders, doctors, hospital owners to own certain crossings. We decided certain specifications are required on particular crossings and public places, what nature of cameras we should use. Once we decided those specifications, the cost estimate was made, which was around near 1 lakh rupees, and then we requested the local citizens, which came forward in huge numbers, and we call these as the sponsors as Trinet ambassadors. And when they came and sponsored these crossings, we facilitated them through use of police bands and garlanding them in public places, which was a huge success. We brought Panchayati Raj department on board. Commissioner Gorakhpur was a huge help, and we both of us spoke with pradhans in the rural areas, and around 6,000 pradhans agreed to install sponsor and give money 1 lakh rupees for a crossing, which a rural road which was passing through their villages. And as on date, over 400 such locations we have already installed cameras. Thereafter, we brought a program called Har Ghar Camera. We motivated citizens to install cameras on their homes, especially the houses which are on different smaller crossings, galiyan, which has no houses of these citizens on the crossings. These citizens have those who have houses on those crossings. We motivated them to install cameras, and that also became a huge success. People realized the importance of it, and as on date, over 17,000 cameras have been installed.
This is when Sarpanch Guddu came across Har Ghar camera and he went the extra mile and covered his village with CCTVs. Guddu, who also runs a business in Gorakhpur, invested rupees 10 lakh from his own personal account and ensured that cameras were installed outside every home. मैम इस बात से बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में कैमरा लगने वाला है और जिससे मतलब जो भी गांव या मोहल्ले में अपराध होता है या जो भी मतलब गलत काम उस बारे में हमें पता चल जाता है और इससे एक फ़ायदा भी है हमारा कि जैसे कुछ भी गलत काम हो या अपराध हो उस बारे में हमें पता चल जाता है. But under this veil of everything is fine now comes the scrutiny of which youngsters are feeling the heat. Elders have started keeping an eye on young men and women through these cameras. अच्छा बुरा तो दिखाई तो दे ही ना, इसीलिए न लगल बा कि अच्छा ही लिए न लगल बा, तो हम लोग को खुशी है. हाँ, लड़की लड़का कहीं भागी है तब वो लौकी, चोर से आ रही है तब वो लौकी है. अच्छा आप बोल रहे लड़का लड़की भाग जाए तो पता लग जाएगा कहाँ गए हैं. कैमरा रही तब वो भागी है, नहीं कैमरा रही तब वो भागी है. मन के खुशी है कि माने RCC कैमरा लग गई बा, सबके माने अच्छा लगी. हमारे गांव बहुत गुंडाई होत रहा, वही लगल बा ऐसी कैमरा. अच्छा, गुंडाई होता था तो महिलाओं को जब गुंडाई होता था तो महिलाओं को बाहर निकलने में तो दिक्कत रहता होगा. हाँ, बहुत दिक्कत होत रहा, अब नहीं दिक्कत होता. तो थोड़ा बता सकते कि पहले कैसा दिक्कत होता था, क्या होता था? दिक्कत होत रहा, कहीं उधर चोरी होत रहा, कहीं उधर चोरी होत रहा. This is Sagrika Kisu for ThePrint. Stay tuned for more such updates.